Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the 4WH analysis, a new initiative taken by me on this channel. ये एक नया इनिशिएटिव है जो मैंने अपने YouTube चैनल पर लिया है 4WH analysis का. In this particular initiative, the Hindu analysis will be transformed into 4WH analysis, meaning thereby what, when, where, why and how. The entire newspaper will be divided into 4 W's and 1 H. At the end of the class, 4 prelims based MCQs or 5 prelims based MCQs will also be given to test the understanding of the current affairs, and daily 1 or 2 mains based question for self practice will be given along with the structure of the answer so that you can practice it yourself. आपको structure दे दिया जाएगा, mains based questions जो दिए जाएंगे और उस structure के basis पे आपको practice करना होगा. I hope that you would like this initiative, and the class PDF will be uploaded on my Telegram channel. Link is given below in the description box. The name of my Telegram channel is Simplifying UPSC with Ease. Before starting the class, here's a small announcement. I am taking paid Unacademy Plus courses on Unacademy Plus, Art and Culture Crash Course and revising the last 1 year's current affairs through MCQs. मैं ये 2 पेड कोर्सेज ले रही हूँ Unacademy Plus पे, आर्ट एंड कल्चर का क्रैश कोर्स और लास्ट 1 साल के करंट अफेयर्स का रिविजनरी कोर्स MCQs फॉर्मेट में. तो आपको 10% डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा अगर आप Sharma20 रेफरल कोड यूज करते हो. इफ यू यूज Sharma20 रेफरल कोड, easily you will be able to get 10% discount. Now let's start with the first important news. Page 1 GS paper 3. ये page 1 से related है. What to study in this news? What is the news? What is styrene? What are the symptoms? As we all know that this Visakhapatnam, that is Vizag gas tragedy is in news. आपको पता है Visakhapatnam gas tragedy news में है. It reminds us of the Bhopal gas tragedy also. ये news हमें भोपाल gas tragedy की भी याद दिलाती है. The styrene gas from the LG polymer plant has leaked and spread over a radius of about 3 kilometers, covering around 5 villages near the Visakhapatnam, which has severely affected more than 5,000 people. Even domestic animals have become victims. आपको पता है कि जो LG polymer plant है, वहां से स्टाइरीन गैस लीक हो गई जो कि 5 किलोमीटर के रेडियस में फैल गई. 3 किलोमीटर के रेडियस में फैल गई. 5 विलेजेस को इफेक्ट किया है इसने. 5,000 लोग इसके चपेट में आए हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी विक्टिम बनी हैं. इट्स डिस्टर्बिंग टू सी अल्टीमेटली हाउ पुअर एंड रूरल पीपल हैव टू पे द प्राइस ऑफ दीज प्लांट्स. ये LG पॉलीमर प्लांट्स और ऐसे कितने इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ता है? गरीब लोगों को या फिर गांव के लोगों को. This particular news is just to share our grief and angst, right? Now, how can this happen? ये हुआ कैसे हो सकता है? Why does these things take place early in the morning? Why should poor people pay the price? Now, the visuals which are available on the news channel or in the newspaper are very disturbing, very soul shaking, right? जिस तरीके की images और video clippings news में दिखाई जा रही हैं, पेपर में आ रही है, बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली हैं. All the people, all the humans, even the animals have to go through such pain, right? These disasters should make us think about the kind of development we want. इससे UPSC aspirants को कैसे सोचना चाहिए कि आपको किस तरीके का development लाना है. These should make us pause and stop and think about the kind of priorities government should make when it comes to giving better life to people. यहीं से हमें इस news को पढ़ने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को किन लोगों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. क्या हमारे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही सब कुछ है, लोगों की जान से बढ़कर है ये सब कुछ? इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन अबाउट द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट और द फेलियर ऑफ गवर्नेंस. Now just a food for thought I am going to give you all. Our prayers are with the people of Vizag. If we could be of any help, right, we can extend our help by through our mindset. हम अपने माइंडसेट के थ्रू हेल्प दे सकते हैं लोगों को जो अफेक्ट हुए हैं, ताकि हम आगे जब फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स बने तो उसी तरीके की पॉलिसीज, उसी तरीके की इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स लेकर आए जो लोगों की हेल्थ को पहले रखे, पहली इंपॉर्टेंस दे, बाकी सारी चीजें बैक सीट पे रखी जाए. राइट? क्लियर एवरीवन? Now, right now, it is unclear at the moment whether the deaths are due to direct exposure to styrene gas or one of its byproducts. फिलहाल अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये जो हुआ है, जो डेथ्स हुई हैं, क्या वो स्टाइरीन गैस के डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से हुई है या फिर उसका कोई बाय प्रोडक्ट है जिसके कारण ये घटना, ये डेथ्स
हुई हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टाइरीन. पहले तो समझते हैं हुआ क्या. गैस लीक विच इज सिमिलर टू 1984 भोपाल ट्रेजेडी हैज अफेक्टेड thousands of residents in 5 villages in Visakhapatnam in Andhra Pradesh. The source of the leak was a styrene plant which is owned by South Korean electronics giant LG. LG Polymer से ये लीक हुआ है. तो यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है कि जब हम इस तरीके की परमिशन देते हैं प्लांट्स को, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को, तो हम क्या पहले रखते हैं, क्या प्रायोरिटाइज करते हैं. ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को हम प्रायोरिटाइज करते हैं या नहीं परमिशंस देने से पहले. नाउ व्हाट इज स्टाइरीन. इट्स अ वेरी फ्लेमेबल लिक्विड दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिस्टीरीन प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास, रबर एंड लेटेक्स. इट इज ऑल्सो नोन एज एथेनाइल बेंजीन. राइट इट डाउन. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. मैं इसको इधर लिख रही हूं. एथेनाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज विनाइल बेंजीन और यू कैन कॉल इट फिनाइलथीन. राइट. स्टाइरीन इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. राइट इट डाउन फॉर प्रीलिम्स. इट इज इंपॉर्टेंट. इट इज an organic compound and the chemical formula for this is C6H5CHCH2. This is the chemical formula for this particular gas. Write it down. It is important for prelims. ये prelims के लिए काफी important है. This derivative of benzene is a colorless oily liquid. ये एक colorless oily liquid होता है and it is a derivative of benzene. ये benzene का derivative है. All right, it can appear yellowish in color. Yellowish in color appear करता है ये. And the compound evaporates easily and has a sweet smell, although high concentrations have a less pleasant color. Oh, sorry, odor. Right. Now, styrene, why it is used? इसको use क्यों किया जाता है? So, the styrene is used to make insulation pipes, automobile parts, printing cartridges, copy machine toner, food containers, packaging, carpet backing, luggage, shoes, toys, floor waxes and polishes. Cigarette smoke and vehicle exhaust contain styrene. जो सिगरेट की स्मोक होती है और जो vehicle exhaust होते हैं उसमें भी styrene पाया जाता है. Right? Now basically what happens when somebody is exposed to styrene? Now there are two types of exposure, short term exposure and long term exposure. दो तरीके के exposure होते हैं. Short term exposure can cause irritation to the eyes, skin and nose, gastrointestinal effects, respiratory effects, and the long term exposures can cause headaches, depression, fatigue, weakness, hearing loss, cancer, balancing issues in the body, concentration problems, etc. Okay, so these are the two types of effects or exposures of styrene which can cause different problems in a human body. Now, what are the symptoms? Symptoms are hearing loss, right? Headache, weakness, difficulty in concentrating, etc. Animal studies according to EPA have reported effect on CNS, liver, kidney, eye, nasal irritation, right? Clear? So this was about the Vizag gas leak. Now based on this a question can be asked in mains. इसी के ऊपर mains में question पूछा जा सकता है. Critically analyze the gaps in the occupational health and safety that have led to failure in catering for the amount of industrial development that has occurred in India. Basically you have to critically examine the gaps, the loopholes in the occupational health and safety that have led to failure in catering for the amount of industrial development that has occurred in India. यानी कि जिस तरीके का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल ग्रोथ आप देख रहे हो इंडिया में, राइट, उसकी वजह से उस ग्रोथ में ऐसे क्या गैप्स रह गई हैं, क्या कमियां रह गई हैं कि उसकी वजह से हमारे हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं. Right? In short, you have to first highlight the context of the question in the introduction. Then you have to start by explaining what you understand by occupational health and safety. आपके मुताबिक occupational health और safety का मतलब क्या होता है? जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ आपकी health और safety क्या मायने रखती है? An occupational hazard is a hazard experienced in the workplace. What is occupational hazard? जब आप काम करते करते किसी तरीके की आपको calamity का सामना करना पड़ता है. It can encompass many types of hazards like chemical exposure, biological hazards, biohazards, psychological hazards, physical hazards, psychosocial hazards, right? So इन सबको आप explain करोगे,
right? And then discuss the gaps in existing policies dedicated to handle these hazards. हमारे गवर्नमेंट इस वक्त हमारी गवर्नेंस में ऐसे क्या गैप्स हैं कि हम इन हैजर्ड्स को हैंडल नहीं कर पाते. देन यू हैव टू कंक्लूड विद सजेशंस एंड सॉल्यूशंस. पॉजिटिवली आपको कंक्लूड करना है, सजेशंस देने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं. राइट? क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. Center should allow states to devise their own economic strategies. Page 4 related to GS paper 2. Now, this is a written interview which Dr. Mayaram has given to the Hindu newspaper, in which he says Center should not issue detailed guidelines for the entire country. It should also take the suggestions and recommendations by states. Former finance secretary advocates the bottom up approach. इन्होंने अपने इंटरव्यू में बॉटम अप अप्रोच की बात कही और कहा है कि सेंटर को खुद से अकेले सारे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, स्टेट्स की सलाह भी लेनी चाहिए. स्टेट्स रिकमेंडेशन इज ऑल्सो नेसेसरी व्हेन द सेंटर फाइनलाइजेस और डिसाइड समथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच. ये बॉटम अप अप्रोच क्या है? बॉटम अप अप्रोच मीन्स टू लोकल एक्टर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग अबाउट दी strategy. If a center is taking and making any strategy, local actors like the states should also participate in that decision making. They should also give their recommendation and suggestions, right? Bottom up approach should not be considered as alternative or opposed to top down approach from national authorities. ये मत समझना कि bottom up approach जो है वो top down approach का कुछ opposite है या कुछ different है. नहीं, bottom up approach मतलब सभी को include करना. Bottom up approach means including everybody in making a big decision. कोई प्रायोरिटी सेक्टर के लिए या कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो उसमें लोकल एरियाज को भी इंक्लूड करना, अगर लोकल एरियाज भी उस डिसीजन से अफेक्ट होंगे. इफ फ्रॉम दैट डिसीजन टेकन बाय सेंटर लोकल एरियाज आर आल्सो गोइंग टू गेट अफेक्टेड, देन देयर रिकमेंडेशन शुड आल्सो बी टेकन. राइट? क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हो गया सबको? Next important news is on page number 5. PETA flags tuberculosis in captive elephants. With tuberculosis prevalent among captive elephants, People for Ethical Treatment of Animals PETA organization has demanded festival organizers go for elephant-free celebrations. It notes that many captive elephants in Kerala are suffering from TB, which is highly contagious and transmissible not only between elephants but also from elephants to human beings. Elephants में TB पाया गया है, राइट? जिसके चलते पीटा ने कहा है कि जितने भी आपके फेस्टिवल सेलिब्रेशन है केरला में, प्लीज 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 वहां एलिफेंट्स का यूज ना किया जाए. टीबी एक बहुत हाईली कंटेजियस ट्रांसमिसिबल प्रॉब्लम है, डिजीज है, जो कि एलिफेंट्स ही नहीं, एलिफेंट से ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकती है. So what is tuberculosis? TB or tuberculosis is a dangerous bacterial infectious disease. ये याद रखना, ये bacterial infectious disease है which is caused by Mycobacterium tuberculosis. It affects the lungs and later it spreads to different parts of the body. There are two basic types of TB, pulmonary TB and extrapulmonary TB. ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो आपके लंग्स को अफेक्ट करती है. बाकी डिजीज से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक ऐसा कारण है जो कि आपकी पूरी बॉडी को, लंग्स को ही नहीं पूरी बॉडी को भी चपेट में ले लेगा. ट्यूबरकुलोसिस इज द सेकंड बिगेस्ट किलर. अंडरलाइन दिस. ग्लोबली देखा जाए तो ये सेकंड बिगेस्ट किलर है. राइट? क्लियर एवरीवन? These are the three areas which get affected due to TB, right? And WHO end TB strategy is also been in news. Strategy aims to end the global TB epidemic. The target is to reduce TB death by 95% and to cut new TB cases by 90% between 2015 and 2035. You have to remember the numbers and the percentages and the year. Okay. It sets interim milestones for 2020, 25 and 30. तीन तरीके के milestones इन्होंने set किए हैं 2020 के लिए, 25 के लिए और 30 के लिए. What are the causes of TB? TB is a contagious airborne disease. ये airborne disease है. It can be acquired from close contact with an infected person. Mycobacterium TB is one of the main causes for this dreadful infectious disease. Infants and aged people are at greater risk for catching TB infections. Individuals with weak immune system because of HIV, diabetes are also exposed to this disease. Mycobacterium tuberculosis, it's a pathogenic bacterial species and mainly comprise of 4 other types of TB causing bacteria, and those are Mycobacterium bovis, Mycobacterium cannati, Mycobacterium microti and Mycobacterium africanum. All right, remember this. This is important for prelims. ये आपके prelims के लिए काफी important है. Now, what are the symptoms of TB?
coughing with blood, night sweats, loss of appetite, bad cough for more than 3 weeks, weight loss, fatigue, weakness, chest pain, fever, sudden and random, okay, sea hills. So these are the important symptoms of TB. India stands at the top when it comes to TB. We have more than 2 million cases which were reported only in 2018. 2018 में ही 2 million cases report हो गए थे. Indian government encourages new tools that will help in TB research and development. Government of India intends to come up with plans in collaboration with Ministry of Science, Technology, Ministry of Health and other ministries to eradicate TB. Next important news, Vande Bharat mission begins. First batch of evacuees arrive. The Vande Bharat mission to bring stranded non-resident Keralites back home got off to a firm start. You have to remember Vande Bharat mission, it will see the operation of 64 flights from May 7 to May 13 and it is the mission to bring back around 15,000 Indian nationals which are stranded abroad. The Indian Navy has also launched Operation Samudra Setu Sea Bridge. It is a part of national effort to repatriate Indian citizens from overseas. बाहर से अपने Indian citizens को इस pandemic में वापस लाने का ये mission है. Indian naval ships INS Jalashwa, INS Magar are presently en route to Port of Mal, Republic of Maldives to commence the evacuation operation. INS Jalashwa is the largest amphibious platform in Navy. It is based on Eastern Naval Command headquarters in Visakhapatnam. It can accommodate 1,000 people but will take about 800 only for the time being. Now next important editorial on page number 6 which you have to read yourself. आपको खुद से ये पढ़ना है because this editorial is self-analysis based. India needs to enact a COVID-19 law. Question over here is, question आता है, there is a need to enact comprehensive and well-planned COVID-19 law. Discuss. You have to, after reading the editorial, I have highlighted what paragraphs you have to read. After reading it, you have to answer this question in your own words. आपको 250 words में 250 शब्दों में अपने आप से analysis करके आंसर लिखना है. I have also highlighted which paragraph you have to read for this particular editorial. कौन सा paragraph इस question को answer करने के लिए जरूरी होगा. This will be the concluding line. ये आपका कंक्लूजन होगा, राइट. दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन एंड दिस विल बी द बॉडी ऑफ द आंसर. क्लियर. ये आप पैराग्राफ्स आपके बॉडी ऑफ द आंसर में फिट होंगे. नेक्स्ट एडिटोरियल, वाटर विजडम ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. एज वी नो दैट वर्ल्ड वाटर डे वाज सेलिब्रेटेड, राइट. मार्च 22 को सेलिब्रेट हुआ था वर्ल्ड वाटर डे, राइट. सो इट वाज ऑब्जर्व्ड. नाउ इन दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, हाउ इंपॉर्टेंट इज द वाटर कंजर्वेशन. That is highlighted in this editorial. GS पेपर 3 के लिए editorial है. क्लाइमेट रेजिलियंट हमें होना और वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए इस महामारी में हमें क्या सिखाया है, इन दो टॉपिक्स के ऊपर ये इस एडिटोरियल में दर्शाया गया है. For prelims you have to remember what was the theme of World Water Day of 2020. It was water and climate change. So I have again highlighted what you have to study. मैंने highlight किया है आपको क्या पढ़ना है इस particular editorial में. These two editorials you have to read yourself. Next important news, SBI cuts lending rate interest on fixed deposit. So SBI has decreased the lending rate interest on lending rate and interest on fixed deposit. You have to remember what is MCLR for your prelims. Okay, आपको prelims के लिए याद रखना है कि MCLR क्या है. The marginal cost of funds based lending rate is the minimum interest rate that a bank can lend at. बैंक जब लेंड करता है तो जो सबसे ज्यादा मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिस पे बैंक लेंड कर सकते हैं, जिसके नीचे जाकर बैंक लेंड नहीं कर सकते, वो MCLR होता है. इट इज डिटरमाइंड इंटरनली बाय द बैंक डिपेंडिंग ऑन द पीरियड लेफ्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन. RBI introduced it. Okay, RBI introduced MCLR methodology for fixing interest rates from 1st April 2016. It replaced the base rate structure and it is calculated based on 4 components. Marginal cost of funds, it is the cost which one has to bear to raise new fund, the tenor premium, operational expense and negative carry on the CRR, cash reserve ratio. And how is MCLR different from base rate? MCLR is an improved version of base rate. Base rate को replace करके MCLR को लाया गया है ना, ये base rate का एक improved version है because it is a risk based approach to determine final lending rate for borrowers who cannot repay the loan. Okay. While calculating MCLR, banks are required to incorporate all kinds of interest rates which they incur in mobilizing the funds.
Now this was all for today. Now let's start solving the prelims based practice MCQs. Which of the following are non-tax revenue sources of government? Basic economic question है ये. Basic economic question. Interest receipt, dividend profit, petroleum license, power supply fees. You have 5 seconds time to answer the question. Correct answer is D. That is all of the above are correct. All of the above are non-tax revenue sources. Question number 2. Consider the following statements with reference to Union Budget 2020-21. Let's see how many of you have prepared the Union Budget 2021. Estimated fiscal deficit for 2020-21 is 3.5% of GDP. Estimated revenue deficit is 2.7% of GDP. Primary deficit is 0.4% of GDP. Which of these statements given above is or are correct? Correct answer is C. That is all of the above are correct. सभी correct हैं. Question number 3. As per the Union Budget 2020-21, which of the following is the biggest Government of India's revenue source? Correct answer is A. Borrowings and other liabilities, as you can see in the picture also. PIB ने ये picture publish की थी. अगर आपने ढंग से budget पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका आंसर. Borrowings and other liabilities are the biggest Government of India's revenue source. Over here, right? देख सकते हो आप इधर. Clear? Question number 4. For the first time in India, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना campaign has been launched by Niti Aayog, PM STIAC, Department of Pharmaceuticals, Indian Council of Medical Research. Very carefully you have to answer the question. Guess मत करना, carefully answer करना. Correct answer is C. That is Department of Pharmaceuticals. Question number 5. Recently, which of the following has published a report named UN, the Lost at Home Report? UNDP, UNEP, UNESCO or UNICEF? Correct answer is D. UNICEF. So this was all for today. I hope you enjoyed this new initiative. If you really enjoyed it, do not forget to share, subscribe and like the video. Subscribe the channel, share it with other aspirants, and we are keeping a like target of 80 likes. हम 80 likes का target रख रहे हैं इस नए initiative पे. I hope आप सभी हमारी मदद करेंगे इस target को reach करने में. Thank you and have a beautiful day ahead.